हेलो, okay, so let's start solving the PYQ questions. All right. Okay, question number 1 for the day. Y is equal to sin inverse of x. Y is equal to sin inverse of x for -1 to 0, x ranging from where? X ranging from -1 to 0, then range of y is option A minus pi by 2 to 0, option B minus pi by 2 to 0 but close interval, option C minus pi by 2 to 0, and option D minus pi by 2 to 0. All right. This is the question. Okay, option B. Okay, option B. Anyone else? Option B is the right answer. Okay, this you need to look at. ये भी देखना है हमें, and then you can decide your answer. Okay, this is question of 2024. Now let's solve the next question. Question 2. This is of 2025. यहाँ पे ग्राफ दिया है कुछ इस तरीके से. ऐसे ग्राफ दिया है, दूसरा ग्राफ इस तरीके से दिया है. लाइक दिस. और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है. Y is equal to x. The values are 0, pi by 2, pi and so on. 0, यहाँ पे pi by 2, फिर यहाँ पे pi, फिर यहाँ पे pi by 2, pi. इस तरीके से ग्राफ बनाया पूरा. ऑप्शंस दिए कि you have to predict this graph. Okay, you have to predict this graph. Y is equal to sin inverse of x and cos inverse of x. दूसरा जो ऑप्शन है वो cos inverse of x and cos x. तीसरा जो है वो sin inverse of x and sin x. and fourth जो है cos inverse of x and sin x. So these are the options A, B, C and D. Yeah, ऐसा किया है. And you need to identify कि ये दोनों ग्राफ किसके हैं. This is your task.
चलिए, कोई रिस्पॉन्स? एनीवन? ऑप्शन डी? ऑलराइट, ऑप्शन बी? ओके, ऑप्शन सी में बी, ऑप्शन बी cos इनवर्स ऑफ x एंड cos x। सी बता रहे हैं, पवित्र is saying C, Riddhi is saying option B, Harshil is saying C, Maulik is saying option D। ओके, पहले तुम ये वाला जो ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? दिस ग्राफ इज व्हाट? ये किसका ग्राफ होता है? पहले ये वाला ग्राफ किसके लिए होता है? तो मैंने ड्रॉ किया है साइन। ओके, तो एक ग्राफ तो साइन का है, वो पक्की बात है। ओके, तो हमें पता है कि साइन एक्स है और उसकी यहाँ पे मिरर इमेज फॉर्म हो रही है, साइन एक्स की एक मिरर इमेज फॉर्म हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, सी और डी में से? सी, बोर्ड के सवाल ऐसे ही आते हैं, ग्राफिकल बेसिस। तो उसका जो y इक्वल टू एक्स पे इमेज बने, सो दैट विल गिव यू ऑप्शन सी एज द राइट आंसर। ठीक है, मैं देता हूं फिर। ऑलराइट, इनवर्स फंक्शन भी 0 पे 0 ही होगा, दैट्स व्हाई cos इनवर्स x लगा है तो वो π/2 हो जाता है, π/2 पे 0 होता है। चलो, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। चलिए, थोड़ा आसान वाला एनालिटिकल देता हूं। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2023। क्वेश्चन इज साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ऑप्शन इज 1/2, ऑप्शन सी इज 1/3 एंड डी इज 1/4। चलिए, ये हो जाएगा। This is easy question. चलिए फटाफट, ये तो होना ही है। ऑप्शन ए, वेरी गुड मौलिक, परफेक्ट। वेरी गुड हर्षिल, ऑप्शन ए 1। इसमें ज्यादा टाइम, ये वाला है जो 1/2 है, तो साइन 30 पे 1/2 होगा, तो π/6, फिर 60 एंड 30 ऐड कर दो तो ये 90 बनेगा। सो साइन 90 इज 1। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए, अगला सवाल देखें। कौन सा दूं, ऐसा सॉल्व करने वाला दूं कि ग्राफ वाला दूं? Which question you want? जल्दी बता दो, क्वेश्चंस बहुत सारे रेडी है यहाँ पे। ग्राफ वाला दूं कि सिंपल वाला दूं? ओके, ग्राफिकल बेस, ठीक है। चलो, यहाँ पे ग्राफ दिया है और 2025 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 2025। ऐसा एक ग्राफ ड्रॉ किया है, ये गलत हो गया। यहाँ पे जो पीक वैल्यू है, यहाँ पे π/2, फिर यहाँ पे पाई, यहाँ पे -π/2। इसका तुम्हें इनवर्स फंक्शन बताना है, इनवर्स। सो ऑप्शन ए में दिया है वैल्यूज, फिर बी में एक ग्राफ दिया है, सी में ग्राफ दिया है एंड ऑप्शन डी में ग्राफ दिया है। ठीक है, ए में कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया है जहाँ पे 0 है,
1 पे है, फिर यहाँ -1 है, यहाँ पे π/2 है और यहाँ पे -π/2 है। यहाँ पे जो ग्राफ दिया है वो इस तरीके से दिया है, 0 है, फिर 1, -1, π/2, -π/2। फिर एक ग्राफ ऐसा दिया है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, दिस वैल्यू इज π/2 एंड दिस वैल्यू इज पाई। एंड फिर कुछ ऐसा ग्राफ है जहाँ पे ये वैल्यू π/2 है और ये पूरा है वो पाई है, ठीक है। So which type of graph it will show? Which type of graph it will show? Option C, okay, ध्यान वहां पे जा रहा है ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी, वेरी गुड रिद्धि। ओके, पवित्र इज सेइंग आल्सो ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी पता कैसे चल रहा है तुम्हें? यू ऑल आर सेइंग ऑप्शन सी, तुम्हें पता कैसे चल रहा है कि सी वाला आंसर सही है? How you get to know? Cos inverse, cos, okay, वेरी गुड। ओके, सो वहां से पकड़ में आ रहा है कि वो ग्राफ किसका है, बढ़िया है। So option C is the correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। एसर्शन दिया है cos इनवर्स cos 13π/6 is equal to π/6 एंड रीजन दिया है रेंज ऑफ y is equal to cos inverse x is 0 to पाई। ऑप्शन शायद तुम्हें पता है सारे, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? यू नो द ऑप्शंस? चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शंस में पढ़ देता हूं। बोथ आर करेक्ट एंड इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फिर ऑप्शन बी इज both are correct but reason A is true, R is false and A is true, तो ये ऑप्शंस रहते हैं। अच्छा, ऑप्शन ए, अर्शिल एंड मौलिक आर सेइंग ऑप्शन ए। चलिए ए सही। व्हाट अबाउट अदर्स? ए आ रहा है? Okay, both are true. So option A is basically the correct one. A is the right answer and it also explains the reason. क्योंकि हम π/6 ले रहे हैं यहाँ पे, तो वो उसकी रेंज में आ रही है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमें फॉलो करना है, so that is the reason we are following this rule. So A is the correct answer for this. चलिए क्वेश्चन 6। ये क्वेश्चन 2023 का है। फंक्शन यहाँ पे दिया f of x is equal to mod cos x and you need to find the value of 3π/4. बेसिक्स फॉलो करो, काफी इजी क्वेश्चन है ये। फॉलो द बेसिक्स, फटाफट हो जाएगा।
चलिए क्या आंसर है इसका? 3π/4 कौन सा एंगल होता है? अच्छा, ऑप्शन डी, सी और डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी रोशिल सिंह। अच्छा, ऑप्शन सी। सी या डी में डाउट है? हाँ, मॉड्यूलस फंक्शन दिया है यहाँ पे। ऑप्शन डी सही है। ओके, मॉड्यूलस फंक्शन दिया है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओरिजिनल वैल्यू वो नेगेटिव है। मॉड्यूलस इज मेंशन्ड, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड एवरीवन, एकदम सही है। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं 2020 का। वैसे तो हम ये साल याद नहीं करते कोविड वाला, तुम लोग बहुत करते हो। छुट्टी थी, पढ़ाई नहीं थी। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot inverse -√3 is option A -π/6, option B π/6, 2π/3 and 5π/6। ओके, ये लास्ट सवाल है इस क्वेश्चन का, सॉरी इस चैप्टर का। फिर हम चैप्टर स्विच कर लेंगे। ओके, ये आंसर बताइए इसका। इट्स गोना बी डी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ये गलत नहीं होना चाहिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इट इज इजी क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए। ओके, अभी ए पे ध्यान जा रहा है। -π/6, all right। चलिए, एनीवन एल्स? व्हाट अबाउट अदर्स? जल्दी जल्दी बता दो, तुक्का लगा दो। बोर्ड में वैसे भी करने हैं थोड़े बहुत तो। नहीं आ रहा है तो वही करना है लास्ट, छोड़ के ना आना एक भी सवाल। ओके, हर्ष इज सेइंग ऑप्शन डी। Minus sign will go out. The logic which Maulik is saying, okay, it is not applicable to cot, because cot inverse जब नेगेटिव होता है, cot inverse जब नेगेटिव होता है तो हम पाई माइनस cot इनवर्स करके उसको बाहर निकालते हैं, राइट? लाइक दिस, नेगेटिव साइन के साथ पाई भी आता है। इफ यू फॉरगेट द फॉर्मूला, यू विल पाई माइनस π/6। तो अगर ये सॉल्व कर जाएगा 5π/6। ऑप्शन डी इज करेक्ट, जिसके लिए करण इतना एक्साइटेड है कि डी वाला ही सही है। क्वेश्चन लिखा तब से वो डी बोल रहा है, बढ़िया है। ये चलो, कुछ हो गया ये तो। ओके, ये वाला रूल याद रखना है। cos इनवर्स देन cot इनवर्स, ये सब में पाई निकल के आता है बाहर। Let's see question 8 from the next chapter. Okay, let's see question 8 from the next chapter. It is from 2025. Let A is equal to
sorry, it is capital A is equal to small aij be a square matrix of order 3, be a square matrix of order 3 such that aij is equal to j minus 2I, then which of the following is true? Option A, A12 is greater than 0. Option B, all aij is less than 0, negative. Option C is A13 plus A31, that is negative 6. And option D, A23 is greater than A32. तो ये सवाल, आप बताओ जवाब क्या होगा? ओके, हिंट दे रहा हूं, तुम्हें क्या करना है, ए आई जे 3x3 का पूरा जो मैट्रिक्स यहाँ पे रख के सारे एलिमेंट्स निकालो, and then you can judge from the options. This is the pattern you need to follow to solve this kind of question. चलिए, I hope you all are solving questions कर रहे हो सब. Anyone? चलिए, एक आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ये वाला. मैट्रिक्स बनाओगे तुम्हें तुरंत दिखेगा कि क्या आंसर सही होना चाहिए. चलिए मैं बनाता हूं तब तक. सो ये होगा A1, A12, A3, A21, A22, A3, A31, A32 एंड A33. तो पहला वाला जो है वो I है, दूसरा J है, तो उससे हम रख के पता चला लगेगा हमें कि क्या आंसर आएगा. इन दोनों में 1 रख दो तो -1 होगा, I2 रख दो, A1 रख दो तो ये -3 होगा, 3 और 1 तो ये 1 होगा, ये 3 तो ये -5 हो रहा है. ओके, व्हाट अबाउट, चलिए कोई आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है सबका. ठीक है, 1 2 रखे तो यहाँ 2 रखो, यहाँ पे 1 रखो तो ये 0 होगा. अगर ये 0 हो रहा है तो ये वाला ऑप्शन गलत है, जिसमें बोला है कि सारे नेगेटिव है, तो वो गलत हो गया. A13 एंड A31, ओके, सारे ना निकालो, वही निकालो सिर्फ A13 एंड A31. सो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा. J is 3 and this is 2, so 3 minus 2 is 1, वो भी नेगेटिव 6 नहीं हो रहा है. A23 यानी कि ये वाला और ये वाला वो फाइंड कर लेते हैं. यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे 3 लगा दो, तो ये होगा -4. फिर A23, सो यहाँ पे 3 लगाए और यहाँ पे 2 लगाए. ओके, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ये होगा -1. So this is A23 and this is A32 which is greater. ओके, ठीक है, तो ये वाला सही ऑप्शन डी तुम लोगों ने बताया. वेरी गुड, परफेक्ट. ऐसा एक और सवाल दे दूं, करोगे ट्राई? जल्दी बता दो, एक और सवाल दो ऐसा. यस, चलिए क्वेश्चन 9. ये जो सवाल है वो 2024 से है. A is equal to given as Aij and 3x3 मैट्रिक्स है. Aij is given as I minus 3j. देन कौन सा वाला गलत है ऐसा पूछा है. ओके, सो A11 is less than 0, ऑप्शन बी.
A12 plus A21 is equal to -6. Option C, A13 greater than A31, and D, A31 will be equal to 0. सेम टाइप का सवाल दिया है, सॉल्व करो। चलिए, कौन सा सवाल है? 8 की बारिश हो रही है यहाँ। ऑप्शन सी। मैं भी रिएक्शन दे देता हूँ थोड़े बहुत। चलिए, बढ़िया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वही करेक्ट आंसर है। अगेन इनइक्वालिटी टाइप क्वेश्चन है ये, तो वही आंसर सही हो रहा है। अगर तुम सॉल्व करो इसको तो देयर इज नो इश्यू। ओके, तो आई होप कि ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है वो क्लियर है एकदम। क्वेश्चन 10 जो अगेन 2024 कंपार्टमेंट के एग्जाम से आया है। क्वेश्चन नंबर 10 2024 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। उसमें x का ऑर्डर दिया है 2 क्रॉस 3, देन y का ऑर्डर दिया है m क्रॉस n, एंड x y इसका ऑर्डर दिया है 2 क्रॉस 5, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, ऑप्शन ए 6, 10, 15 एंड 35। क्या होगा आंसर इसका? चलिए, बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं यहाँ। ओके, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 15, ओके ऑप्शन बी। पहले तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि y का ऑर्डर क्या होगा, वो पता लग गया तो तुम सॉल्व कर पाओगे। First you need to determine the order of y। जो ये एक्स वाई है राइट, जो डिफाइंड है, तो वो तभी डिफाइंड होगा जब ये 2 क्रॉस 3 एंड ये क्रॉस n, तो ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पे सेम होगा, एंड दिस बोथ शुड बी सेम। दिस इज द रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो m का वैल्यू जो है वो 3 है, वो हमें पता लग गया। तो यहाँ पे 2 क्रॉस 5 है ये, तो n का जो वैल्यू है वो कितना 5, तो y is order of 3 cross 5, so total elements will be 15. So option C is the right answer. Any doubt? Anyone? Option C will be the correct answer. कोई डाउट है? पूछ लो। If any doubt you can ask. चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखें, जो 2024 से है। यहाँ पे दिया है A, B, C, D 5 0 0 0 0 is a scalar matrix. Then A plus 2B plus 3C plus 4D will be equal to what? 0,
5, C 10 and D 25. चलिए ये वाला सॉल्व करो। कौन सा आंसर सही होगा इसमें? Which will be the correct answer? तो इसमें कोई डाउट नहीं है। आई एम इरेजिंग दिस क्वेश्चन। स्केलर मैट्रिक्स है, तुम्हें वैल्यू बताना है। ऑप्शन डी, सी विल कम इन दिस आल्सो। वो सी बता रहा है हर एक में। कोई भी क्वेश्चन लगाओ, सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर बता रहा है कि गेम खेल रहा है? चलिए ऑप्शन डी, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? डी, अच्छा सी आएगा, वो आपस में ही चिपका हुआ है। चलिए स्केलर मैट्रिक्स यानी कि ये इसका और इसका दोनों का वैल्यू 5 होगा और बाकी सारे जो वैल्यूज है वो 0 हो जाते हैं। तो अभी ए के जगह मैं 5 रख दूं, बी का वैल्यू 0 है उसको हटा दो, सी का भी 0 हटा दो और ये 4 इंटू 5 तो टोटल हो गया 25। डी इज द राइट आंसर। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स सारे सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल होंगे इसमें। ओके, दैट इज लॉजिक परफेक्ट। ये वाला सही नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन 12 देखते हैं। 2005 का क्वेश्चन है ये। A is 1 0 -3 then -2 4 2 -1 1 sorry -1 and 1. B is given as -2 5 -5 -7 and C is given as 9 8 7. ओके, तो कौन सा डिफाइन होगा? ओके, वो तुम्हें बताना है। ओनली A and B, multiplication of AB, only C. Option C is only A and option D is all. ओके, A B A C and B सारे सारे के सारे डिफाइंड है। इसमें भी क्या आएगा? आंसर सी आएगा करण। चलिए इसमें क्या आंसर आएगा? ओके, ऑप्शन बी। Option A, everyone is saying option A. Pavitra is saying option B. Okay. अब A बता रहे, चलिए देख लेते हैं। When you want to define A B, ये हो गया 3 क्रॉस 3 और ये हो गया 3 क्रॉस 1। ये दोनों सेम है तो तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको। Then you have to check for the BA. So 3 क्रॉस 1 and 3 क्रॉस 3. These two are not same, तो ये डिफाइन नहीं होगा। When you check for AC, so 3 क्रॉस 3 1 क्रॉस 3, बस ये दोनों सेम नहीं हो रहे। ऑप्शन A will be the right answer. Option A will be the correct answer. Okay. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे तुम्हें चेक कर लेना उसके ऑर्डर से। इसका जो सेकंड है यानी कि कॉलम और इसके लिए जो रो है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तभी तुम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो।
This is the thing. ठीक है, चलिए ये सारे चैप्टर वैसे इजी है, बट यू हैव टू फोकस व्हाइल यू सॉल्व द क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन नंबर 13. 2024 का एक सवाल है. इफ a इज इक्वल टू x 0 1 1 and b is given as 4 0 minus 1 1, then value of x for which a square will be equal to b. Option A -2, b +2, c ±2 and d 1. चलिए करिए क्वेश्चन 13 नंबर का. चलिए कोई आंसर? ऑप्शन सी -2, सी +or-2 ये लग रहा है. ओके, ऑप्शन ए -2. चलिए कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, we need to multiply, you need to find a square first. तो पहले x 1 1 and x 0 1 1 इसको तुम्हें फाइंड करना है. तो पहले आएगा x, फिर आएगा ये 0, फिर आएगा x +1 और ये आएगा 1. इसको तुम्हें इसके साथ इक्वेट कर लेना है, a स्क्वायर को b के साथ. तो एक x स्क्वायर इक्वल टू 4, दूसरा मिलेगा x इक्वल टू -1 +or-2 और एक होगा x -2. इसमें से जो कॉमन वैल्यू है, इंटरसेक्टिंग वैल्यू, वो तुम्हें देखना है एंड देन यू कैन गेट द राइट आंसर. तो इसमें -2 इज द कॉमन वैल्यू, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. जो डीवी गेमिंग है उसका आंसर सही है, ऑप्शन ए. बढ़िया है. ओके, इफ आई कैन सॉल्व इट. चलिए कर दो इरेज, बेटा दो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूं. क्वेश्चन 14 आई गेस. इफ मैट्रिक्स A is given as 1 -1 -1 1 and A square is equal to KA, then value of K is what? 1 -2 2 and D -1. Yes, current answer was also right, -2, but it was with the question mark. तुम सामने पूछ रहे थे कि यही आएगा.
चलिए ऑप्शन सी अगेन. ऑप्शन सी 2. चलिए एवरीवन इज गेटिंग 2. इसको तो मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर वाला ये मिलेगा 2 माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई करके ये निकलेगा. ऑलराइट, तो अगर 2 आ रहा है तो 2 इज द राइट आंसर. परफेक्ट, 2 इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 जो 2023 का सवाल है. इफ 111 011 and 001 XYZ is equal to 632, then value 2x plus y minus z is blank. Option A B 1, 2, 3 and 5. चलिए ये वाला क्वेश्चन करो. चलिए solve this question. It's 5. Getting answer 5. Option B. Option C. अच्छा B C तीनों आ गए यहाँ पे. B C और D तीनों बता दिए. What about others? देखते हैं किसमें वो ज्यादा होता है. Option D. Okay, Arshi is also saying D. यहाँ पे क्या इसको मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें ऐसा इक्वेशन मिलेगा x plus y plus z and that you can equate with 6. Then you can get y plus z equal to 3 and then you can get z equal to 2. अगर z तुम्हारा 2 आ रहा है तो इसको यहाँ पे लगा दो तो y 1 आ जाएगा. x और y 3 टोटल हो रहा है तो x का वैल्यू तो x का वैल्यू 3 होगा. यहाँ पे लगा के देख लो क्या हो रहा है. 3 2 जा 6 होगा ये. y का वैल्यू 1 है प्लस 1 माइनस 2 इज 5. तो ऑप्शन डी सही आंसर है. ओके, हाँ यस, डी इज द राइट आंसर. परफेक्ट. चलिए एक ट्रिकी क्वेश्चन दू. रेडी? एक बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे ही चलने दू. दे दू एक सवाल बढ़िया वाला. यस, गुड टू गो. चलिए क्वेश्चन 16 17 आई डोंट नो, 2024 का ही क्वेश्चन है. एफ ऑफ एक्स दिया यहाँ पे, साइन एक्स and f of x the whole square is equal to f of kx. Then k is equal to what? 1, 2, 0
-2। ये वाला क्वेश्चन करो। ऐसा एक सवाल है एनसीईआरटी में। That question is converted into objective form. First, if you want to find this, तो इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई करो वापस। So it should be like this: cos x minus sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। उसके साथ ही उसको मल्टीप्लाई करो, cos x minus sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। मल्टीप्लाई दिस टू। अच्छा, ऑप्शन बी आ गया। ऑप्शन बी, Aaron getting nice. Okay, B is perfect answer, so I don't need to solve it. चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन 2025. If A is given as 1, 12, 4y, 6y, 5, 2x, then 8x, 4, and 6 is a symmetric matrix, then 2x plus y का जो वैल्यू है वो क्या होगा? -8, 0, 6 and 8। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। Okay, option C, that is 6. Option C. Okay. Gaurika Sharma is saying C, Harsh is saying C, Maulik is saying C, Karan is saying D. तो 6 या 8, 6 या 8 कौन सा आंसर सही होगा? Anyone else? और कोई? और कोई? It's D. Okay, Rhythm is saying C. चलिए, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A और A ट्रांसपोज सेम होगा। सो 1, 12, 4y, 6x, 5, 2x, 8x, 4 and 6। ट्रांसपोज लगा दो 1, 6x, 8x, then 12, 5, 4 और फिर 4y, 2x, 6। अगर इसको और इसको कंपेयर कर ले हम तो x का वैल्यू 2 बन जाएगा एंड 4y इक्वल टू 8x।
तो y का वैल्यू 4 बन जाएगा. ओके, एंड व्हेन यू प्लेस दिस टू वैल्यूज ओवर हियर, आंसर विल बी ऑप्शन डी. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. तो आंसर है 8. परफेक्ट. I hope there is no doubt. चलिए क्वेश्चन नंबर 19. बहुत सारे सवाल किए आज. यस, डी इज द राइट आंसर. परफेक्ट. ओके, एक थियरी बेस्ड क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बोथ सिमेट्रिक एंड skew symmetric? So option A is unit matrix. Option B is diagonal matrix. फिर option C क्या दिया है? null matrix. And option D is row matrix. Which can be both? Option C. Okay, null matrix. Okay, null matrix C. All right, what about others? Null matrix. So null matrix right answer है इसका. Okay, null matrix. Yes, perfect. C, null matrix is the right answer. Okay, it was there in an exam. Good. स्कूल के जो भी पेपर्स रहेंगे तुम्हारे वो PYQ से ही उठा के देंगे. यस, गौरिका. सी, राइट आंसर. परफेक्ट. Okay, now I'm switching the chapter. So question 20. Let's say one of the question. start करते हैं. 2023 का एक सवाल है. इसमें दिया है डिटर्मिनेंट 3 4 अल्फा 3 4 1 2 1 and 1 4 1. Sorry, this is a determinant which is equal to 0. तो तुम्हें अल्फा का वैल्यू फाइंड करके बताना है. ऑप्शन भी इजी है, 1 2 3 4. तो ये एक वार्म अप क्वेश्चन हो गया. is also there in an NCERT. yes. चलिए इसमें से अल्फा का वैल्यू फाइंड करिए, थोड़ा डिटर्मिनेंट प्रैक्टिस हो जाए. ओके, डी, ऑप्शन डी आ रहा है. 4. ओके, ऑप्शन डी. ओके, ऑप्शन डी 4. ऑप्शन डी 4. others getting the same. So yes, option D 4 is the right answer. इसका सही आंसर वही है 4. 2a equal to 8. बढ़िया है. Yeah, everyone got it right. Option D तो परफेक्ट आंसर था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं.
Question number 21st. So here in 2020 there is a question. This type of questions will be there in exam. Determinant of A is 8. So determinant of 3A you need to find. Option A is 8, B is 24, C is 72, and D is 216. It is determinant. Chapter is determinant. I hope you have done it. Determinant, chapter number 4. I hope you have done this chapter. चलिए किसी का आंसर है इसका? ऑप्शन डी, सब डी बता रहे इसका. 216. Okay, that will be the answer. So 3 raised to जितना मल्टीप्लाई करो उसका ये जो पावर है वो ऑर्डर होगा. And that into determinant of A. So 3 cube into 8. So 3 cube into 8. Okay, so option will be D. That is the right. 27 into 8. Option D सही है. 216. Perfect. चलिए और कोई डाउट इसमें? Okay, I don't know about what's the time right now. Okay, it's about an hour for the lecture. और क्वेश्चन करने हैं? Want to solve more questions? Yes, no? जल्दी बता दो और सवाल करने हैं. Till 25. Okay, ये कितना था क्वेश्चन नंबर? क्या था? I don't know. 22nd, 3rd. 4 questions more. ठीक है, चलिए 4 और सवाल करते हैं. No issue. Question number 22nd. 22nd. If A is Q symmetry, matrix of order 3. If A is 3 cross 3 matrix, कौन सा वाला? Q symmetric matrix of order 3. Then determinant of A will be blank. 3, 0, 9, 27. 3, 0, 9, 27. अच्छा 12 बजे तक पढ़ना है. अभी तो 11 भी नहीं हुए. Okay, option B, 0. Option B, 0. Anyone else? और कोई? Option B, 0. Yes. सबका वही आ रहा है. Z, 0. 0 is the right answer. 0 is the right answer. Perfect है, बढ़िया. Very good मौलिक. रीजन भी बताया है.
वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। क्वेश्चन 23 आई गेस 2020 सामने दिखा, वो छाप दिया। A -2 0 0 0 -2 0 and 0 0 -2. Then determinant of adjoint of A will be equal to what? 64, option B 16, C 0 and D -8. डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, परफेक्ट। चलिए ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? $64. 64 is the right answer. Okay, -8. What about others? चलिए फॉर्मूला पहले क्लियर कर लो। एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो a⁻n-1 के बराबर होगा। चलो इतना क्लियर है, तो फिर तुम इसका डिटर्मिनेंट निकालो, क्या आएगा? इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? -8 और 3 क्रॉस 3 है तो -8 का स्क्वायर लगा दो, दिस विल बी 64। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। परफेक्ट, ए सही आंसर है इसका। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। लास्ट सवाल करते हैं आज का। सेम टाइप का ही दे रहा हूं ताकि प्रैक्टिस हो जाए तुम्हें। This was there in 2023. Let A be 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। उल्टा दिया, एडजॉइंट ऑफ ए बता रखा है इसमें 64, then A will be equal to, sorry, determinant of A will be equal to 8 only, -8, C 64 and D 8 or -8. The answer. Karan is on fire. Yes, absolutely. सारे आंसर सही आ रहे उसके। Karan is a pro player. Okay, Maulik is saying option D. What about others? Yes, plus or minus D is the right answer. Okay, so see you all in the next session. Plus or minus 8 is the correct answer, and I hope this session remained very fruitful. You all were very responsive, quality questions थे जो हमने solve किए। Okay, also invite your friends to join the session, and ऐसी तरीके से हम पढ़ाई करते रहे और अच्छे सवाल solve करते रहे, right? So see you all in the next session. Good night.